हेलो एवरीवन, सो दिस इज अ नोटिफिकेशन फ्रॉम केवीएस एंड एनवीएस। फाइनली टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आ चुकी है एंड फॉर्म फिलअप 14 नवंबर से 4 दिसंबर तक रहेंगे। और क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एवरीथिंग इज गिवन इन दिस डिटेल नोटिफिकेशन। केवीएस एंड एनवीएस दोनों मिलकर एक ही एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, जिसकी फीस नॉर्मल जनरल स्टूडेंट्स के लिए 2000 रहेगी। देयर इज रिलैक्सेशन फॉर SC ST एंड उनके लिए फीस डिफरेंट है। एंड फॉर डिफरेंट पोस्ट द फीस इज डिफरेंट। फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट, फॉर टीचिंग पोस्ट प्रिंसिपल की फीस अलग है एंड देन पीजीटी एंड टीजीटी की फीस सिमिलर है। नाउ कमिंग ऑन टू पीजीटी इन केवीएस। केवीएस में पीजीटी की कितनी सीट्स है, एवरीथिंग इज गिवन हियर। ओनली थिंग टू पॉइंट टू नोट डाउन हियर इज केवीएस में बायोटेक के लिए भी पीजीटी की सीट है। ये चीज़ एनवीएस में नहीं है। एनवीएस में फिजिकल एजुकेशन के लिए सीट है, जो कि केवीएस में नहीं थी। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इन एनवीएस में असमीज, गारो, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला, मणिपुरी है। एंड टीजीटी केवीएस, टॉकिंग अबाउट टीजीटी, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। सो पीजीटी में आपको सीटेट अनिवार्य नहीं होता है, बट फॉर टीजीटी एंड पीआरटी यू हैव टू क्लियर सीटेट। सीटेट पार्ट 2। ओके। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस इन स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी वाइज दी गई है। एंड लाइब्रेरियन भी पोस्ट रहेगी एंड यू कैन सी द वैकेंसीज हियर। नाउ टॉकिंग अबाउट ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर इन एनवीएस नवोदया स्कूल में हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन फीमेल वैकेंसी रहेगी। टीजीटी आर्ट, दैट इज आर्ट एंड क्राफ्ट, टीजीटी म्यूजिक, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरीज। नाउ ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर इन एनवीएस, बिकॉज एनवीएस रूरल एरियाज में खोला गया है, सो हर एक रूरल, रीजनल, एथनिक जो लैंग्वेजेस है उसके लिए एनवीएस में पोस्ट है। नाउ टॉकिंग अबाउट प्राइमरी टीचर, पीआरटी टीचर के लिए वी ऑल नो हमें सी टेट पार्ट 1, सी टेट 1 क्लियर करना रहता है। एंड देयर आर सर्टेन अदर नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस। एनवीएस में पीआरटी टीचर्स नहीं रहते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। एनवीएस में पीआरटी टीचर नहीं होते हैं, नो पीआरटी। Talking about non-teaching post, we will discuss it later. Now, what are the basic qualification for PRT, PGT, TGT? So, for PGT teachers, the pay scale is given. आपके पास मास्टर डिग्री रहनी चाहिए और मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए बिफोर दिस नोटिफिकेशन विद योर रिजल्ट। लास्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन से पहले पहले आपके पास सभी डिग्री, सभी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इफ यू वांट टू बिकम पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी फिजिक्स, आपके पास ये सब्जेक्ट इन योर बैचलर्स इज अ मस्ट रिक्वायरमेंट। कुछ बच्चे रहते हैं जो अपना सब्जेक्ट मास्टर्स में चेंज कर देते हैं और वो सब्जेक्ट उन्होंने बैचलर्स में नहीं पढ़ा होता है, सो दे आर आउट, दे कैन नॉट अप्लाई फॉर इट। बीएड इज अ मस्ट, बीएड, एमएड, okay? So for biotech also you need BEd. Now coming on to postgraduate teachers, computer science, physical education, male, female, and modern Indian language, they also require BEd degree. For PGT, they also require BEd degree. Computer science PGT, they require BEd. But for physical education, they do not. This is very important to note here कि PGT physical education के लिए हमें BEd नहीं चाहिए। PGT modern language के लिए हमें BEd चाहिए, masters चाहिए। And coming on to TGT, it is very important. TGT के लिए क्या क्या essentials है? So, pay scale दिया गया है और KVS और NVS में क्या rules रहेंगे, that is also given here. आपके पास या तो इंटीग्रेटेड या आपके पास ऑनर्स या पास कोर्स डिग्री रहनी चाहिए और बीएड डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स आपको चाहिए। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपकी बैचलर्स में 50% मार्क्स नहीं बन रहे हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री से अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज you should possess CTET paper 2 qualification. You should be qualified in CTET paper 2, and then you should be having competency to teach through English and Hindi medium. Especially in KVS, you require English and Hindi medium proficiency. Now coming on to TGT
you have to study Hindi as an elective and main subject if you want to become TGT Hindi. If you want to become TGT English, then you have to possess that these subjects. Otherwise, you cannot apply. Same goes for TGT Sanskrit also. Now coming on to train graduate teachers in maths, science, and social studies. So there are certain combinations that are required for maths, science, and social sciences. So you can note it down. TGT maths as main or elective subject in your graduation. Physics at least 1 year or 2 semesters. One out of chemistry, electronics, computer science, statistics at least one or any 2 semesters. The candidates who have studied under choice-based credit system with the above subjects combination are also eligible to apply. Candidates with BSc honors in physics or chemistry are not eligible for the post of TGT maths. It is very important to note here, if you are possessing BSc honors in physics and chemistry, you cannot apply for TGT maths. TGT science, if you have studied biology, life science, botany, zoology as honors main subject in at least 3 years or 6 semesters, means all the semesters. Biology or life science with the combination chemistry, botany, or zoology. Botany, chemistry, and zoology as your subsidiary subject. Zoology, chemistry, and botany as your subsidiary subject. So you must possess chemistry with the main subject. Okay. So coming on to PGT, social science. So it is the most debatable combination. So again, you have to study history or geography. You need history or geography in your graduation. If you have studied history with economics, you can apply. If you have studied history and geography, you can apply. If you have studied history and political science, you can apply. Same goes for geography. But if you're having the combination such as political science and sociology, economics and sociology, you cannot apply. You're out. So this is all about the TGT. Now coming on to the most important thing, that is the tier 1 exam. So tier 1 exam will be of 300 marks. 100 questions होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, and general reasoning, numeric ability, basic computer literacy, general knowledge, all of them will be for 60 marks each. Language competency English, and second language competency, be it Hindi, both of them together will be of 60 marks. So those who will be able to qualify tier 1, they will be qualified for they will be called for tier 2 exam. Okay. Okay, so tier 2 के लिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे? That the ratio is 1:10. There will be negative marking, that is 1/3 will be deducted. And the most important thing here is the paper will be pen paper mode. That will be in pen paper mode. It will not be CBT based. Okay, so there will be no computer based paper. It will be only pen paper based. Coming on to tier 2, जो टियर 2 होगा जिसमें बच्चे बुलाए जाएंगे पेपर 1 के बेसिस पर, 1:10 रेशियो के बेसिस पर, यहाँ पर आके उन्हें फिर से 100 नंबर का पेपर क्वालिफाई करना होगा, जिसमें कि उन्हें एमसीक्यू बेस्ड 60 क्वेश्चंस आएंगे, दैट इज 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे जिसमें आपको ऐसे राइटिंग टाइप में आंसर लिखना होगा, दैट इज फॉर 4 मार्क्स ईच। 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको लिखना रहेगा, रिटर्न रहेगा, और हर क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। फॉर एवरी नेगेटिव क्वेश्चन, फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, देयर विल बी डिडक्शन, दैट इज 1/4, दैट इज 1/4। ओके, और 1:3 रेशियो ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसी, जो बच्चे टीयर 2 को क्वालिफाई करते हैं उनमें से 3 टाइम्स टू द वैकेंसी बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। एंड 85% हमारी वेटेज टियर 2 एग्जाम के लिए है, एंड 15% हमारी वेटेज इंटरव्यू के लिए रहेगी। सो दैट इज ऑल। मोस्ट important thing about age is age relaxation is given for women, that is 10 years. Suppose you can see here the fee structure, and no examination fee is required to be paid by candidates belonging to SC, ST, PW, BD, and ex-serviceman category. They only have to pay processing fees, that is 500 for each post. You can see the fee structure and processing fee, examination fee. So for general student, 2000 rupees for PGT, TGT post, and for PRT, also 2000. So that was all about the teaching post, and I will make a separate video for non-teaching one.